business. Business. It's all around us, and it's these airwaves that allow us to send signals to a device, like a mobile phone. You don't have to be a scientist to be smart about spectrum. Spectrum refers to radio waves, some with higher frequency and some with lower. Different technologies can be used to send information over them. All of the possible frequencies put together make up the spectrum. Now, everything that communicates wirelessly, like your television, smartphone or baby monitor, uses a small slice of the spectrum. With me so far? You can think of these different spectrum slices, or bands, as roads, with all sorts of data passing back and forth. Each type of signal travels in its own special lane. So with all this traffic, how do signals avoid bumping into each other? That's where government plays a role. Regulatory authorities have to decide which parts of the spectrum are used for which type of service, and how the spectrum can be used to deliver the greatest benefit to society. People everywhere are benefiting. Consider how far we've come. The first SMS was sent in 1992. Today, there are more text messages sent each day than there are people on the planet. Every 3 seconds, someone buys a new device to connect to the internet. And the mobile industry supports a larger economic ecosystem than we ever imagined, generating $1 trillion per year. You see, people love to communicate, and they want to live a connected life. Just consider all the kinds of mobile devices we have today in health, transportation, utilities, education, even e-government. And new devices are being introduced all the time with immense social benefit. The thing is, spectrum is a limited resource, and roads can only handle so much traffic. That's why mobile operators are continually investing in technologies and infrastructure to handle more traffic with the same amount of spectrum. But higher demand means we still need more lanes. One solution is to free up spectrum reserved for older technologies to accommodate the new. But new roads take careful planning and years of negotiation, and they don't stop at national borders. That's why we have the ITU, a United Nations body tasked with building international consensus for harmonized spectrum around the globe. To realize the vision of a connected life, we need more roads, and we need to get the word out. Spectrum is not just for the experts. Spectrum is everybody's business. So let's get those next spectrum roads built. आपको मालूम है कि 3G क्यों नहीं आया पाकिस्तान में? 3G मालूम है क्या? What's that? It's a generation of like. It's just a third generation. 3G के बाद क्या आता है? 4G. No. And now they have changed it. It's called LTE, right? Which is long-term evolution. So again, this is the reason. The spectrum non-availability is the reason that we don't have 3G or LTE in Pakistan. Abhi bhi available hai 4G, which is through how? Evo. So Evo is wireless. Evo is 4G, but जो GSM के नेटवर्क से उसके ऊपर नहीं है, CDMA के नेटवर्क्स पे है. तो वो उन्होंने फ्रीक्वेंसी ख़रीद के रखी है. तो ये जो लाइनें वो बता रही थी वो फ्रीक्वेंसी हैं जो कि उन्होंने ख़रीद के रखी, यूज़ नहीं करें. And PTA is not taking it away, and that's why we're not getting the service. That's why there's. अब ये लोग GSM वाले क्या कर रहे हैं, लोगों को वोकल कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि आप लोग शोर करें जाके कि भाई क्यों नहीं खुला कर रहे हो यार. अभी तक तो वो नहीं बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाया हुआ था ना, तो that's why they're making it simple so people can understand how it works, and जाके आप लोग फिर समझें और आगे भी समझाएंगे. लेकिन रेहान भाई यार कि जहाँ तक PTA इन्वॉल्व है यहाँ पर फर्दर टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्किंग को काफ़ी सपोर्ट दी जाती है. दोबारा नहीं समझा. Bearing like creating a kind of a monopoly concept. Creating a kind of a monopoly concept. जैसा कि फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं कि ये रोड जो है बेसिकली लाइसेंस्ड है,
पर CDMA वालों के पास है, GSM वालों के पास नहीं है। ये आज से 8 साल पहले फ्रीक्वेंसी एलोकेट हुई थी। 8 साल पहले समझा जाता था कि जी 3G है ना, वो भी बहुत 144 की जो स्पीड है। आपको अगर डायल अप का ज़माना किसको याद है? डायल अप के ऊपर स्पीड क्या होती थी? 28 किलोबिट, ठीक है। एज जो है, जो आप आज डेटा यूज़ करते हैं, उससे कितने गुना तेज़ है? 6 गुना तेज़ है। That's 144 के which you get on edge right now. वो डायल अप was 28 के। प्रॉब्लम ये हो गया कि उस वक्त वीडियो नहीं होती थी, उस वक्त चीज़ें नहीं होती थी। अब हमारी कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट, हमें हाई डेफिनेशन की फिल्म देखनी है। मेरे घर पे 50 meg की इंटरनेट लगा हुआ है, ये ऑफिस में भी लगा हुआ है। अब आप जाके हाई डेफिनेशन यूट्यूब की वीडियो देखें, पता ही नहीं चलता कि हाई स्लो आ रहा है, धड़क आ जाती है। सो दैट्स हाउ थिंग्स आर चेंज। हमारी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट चेंज हो गई। हाई डेफिनेशन मूवी की रिक्वायरमेंट। योर क्वेश्चन वाज कि लोग लेके बैठे हुए, लोगों ने पैसों से $4 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली लाइसेंस की फ्रीक्वेंसी के लाइसेंस पैसे दिए थे उन्होंने। लेकिन ऑफ कोर्स अगर इस जहाँ तक टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस सेक्टर्स देख रहे हैं आप, कंसीडरिंग एज 4 बिलियन, लेकिन अगर जहाँ पर फ्रीक्वेंसी के पैसे उन्होंने लाइसेंस के लिए लिए थे 20 साल के लिए पैसे, और जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा लाइसेंस खरीदे थे वो दैट वाज कॉल्ड DVCom। फिर उसको तोड़ के उन्होंने टुकड़े बना के टुकड़ों में बांट दिए। अगर वो नहीं होती तो वतीन नहीं आता, और दूसरे नेटवर्क वाले उन्होंने ख़रीदा। वाईमैक्स भी वायरलेस पे चलता है, तो वो फ्रीक्वेंसी उन्होंने खरीदी थी। 1900 बैंड होता है, 1800 बैंड होता है, 1600 बैंड होता है, 900 जैसे कि यहाँ पर बता रहे थे, जैसे कि दूध जब तक पुराना वापस नहीं लेंगे दोबारा नहीं बेचा जा सकता। रोड खाली पड़ा हुआ है, यानी कि जगह है लेकिन कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। और रोड नहीं बना सकते? नहीं, कैसे बनाओगे? You can't create this is it's you can't do that. It's a fixed frequency। गवाला में ना बनाई है, हमारे बनाई भी नहीं है। हम रेडियो वेव्स को यूज़ कर रहे हैं और उसके ऊपर डेटा को नशर कर रहे होते हैं। लेकिन पूरी की जितनी भी वो रेल्स है उसका 100% कोटा तो किसी को डेडिकेट नहीं कर सकते। जैसे ऑलरेडी आप बता रहे हो, जिसके पास भी है एलोकेट कर रहे होते हैं, परसेंटेज करते हैं ना, बीइंग शेयर्ड और एज बीइंग जितनी अवेलेबल थी वही। अब सेकंड और ऑप्शन वो ये है जो अमेरिका में इस्तेमाल हुआ है, वो ये हुआ है कि अमेरिका में उन्होंने ब्रॉडकास्ट टीवी ख़त्म कर दिया। जब ब्रॉडकास्ट टीवी ख़त्म कर दिया तो उसका जो स्पेक्ट्रम खाली हुआ उसको उन्होंने मोबाइल ऑपरेटर्स को बेचना शुरू कर दिया, इस पे चला दो। तो ब्रॉडकास्ट टीवी एग्जिस्ट ही नहीं करता उस फ्रीक्वेंसी पर। इसी तरह पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा कि ब्रॉडकास्ट टीवी जो ब्रॉडकास्ट होता है, जो इस पर एंटेना लगा के आप टीवी देख सकते हैं, दैट विल हैव टू UHF की फ्रीक्वेंसी वो ख़त्म होगी, वो फ्री होगी। और UHF के अंदर जो है ना बैंडविड्थ ज़्यादा होती है, उस पर ज़्यादा पाइप डेटा दिया जा सकता है। So you can learn more about this on YouTube कि how does these spectrums work there and how does the RF work, so you will maybe understand better. अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी प्रॉब्लम ये है कि वो फ्रीक्वेंसियाँ जो अवेलेबल हैं उनकी ऑप्शन होगी। जैसे ये ग्लास है, एक ही ग्लास है, 3 आदमी खरीदार हैं, तो जो ज़्यादा बिट करेगा उसको मिल जाएगी। अब सबको नहीं मिल सकती, ये लड़ाई हो जाएगी शुरू वहाँ पे, तो एक ले लेगा दूसरे को मिलेगी। GSM के अंदर GSM हो या in future there is no GSM or CDMA, it's gone, it's all LTE. So there is no GSM or as such or CDMA as such, so it's changing. इसकी वजह से भी हुआ है ना कि GSM वाले नहीं चाह रहे कि CDMA टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाए। CDMA पहले लॉन्च हो चुका था। That's not necessarily. CDMA दुनिया में सबसे ज़्यादा अमेरिका में और कोरिया में यूज़ होती है। वो तो यहाँ तो और कौन बेच रहा है? अब एरिक्सन बेच रहा है और नोकिया बेच रहा है, हुआवे बेच रहा है और एरिक्सन बेच रहा है। तो अब जिन्होंने एरिक्सन के साथ जिनकी सेटिंग हुई है तो एरिक्सन CDMA में स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो कहता वेंडर कहेगा नहीं यार ये समाज प्लस ये कि क्योंकि उनके एग्जिस्टिंग नेटवर्क उसी तरह के चलते हुए आ रहे हैं तो वो अपग्रेड करना चाहते हैं। तो वेंडर सप्लायर बहुत सारी चेन है ना पूरी जो इफेक्टिव होती है। तो अब पूरा मैं निकाल के बाहर फेंक दूँ तो नहीं सकता। जैसे मैं 220 पे चल रहा हूँ, सब उनके साथ हुआ अल्टीमेटली वो इंटीग्रेटर से गेट कॉस्ट नहीं किन के पास अलग स्टोरी। But still, स्पेक्ट्रम का जो कि रोड है चलना वो शेयर नहीं हो सकता। It can be all run by only by one identity. This is Not necessarily. It can be शेयर्ड होगा, उस कंपनी का थ्रू शेयर्ड होगा। वो एक थर्ड पार्टी कंपनी है कि वो शेयर होगा। लेकिन बेचेगा तो एक को ना, as a PTA has to sell it to one body. PTA 5 को नहीं बेच सकती एक ही चीज। But if that body want ये गिलास है, आपने कहा कि ये गिलास, अब मैं 5 आदमी को कैसे बेचूं? ये गिलास एक गिलास है। हाँ मैंने एक को बेचा, उसने कहा ये 4 आदमी किराए पे ले लो उनसे। possible, right? Yes, but that I don't know how that works. Mechanics are changing also. Again, मल्टीप्लेक्सिंग समझते हैं सब लोग? कौन नहीं समझता? मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? मल्टीप्लेक्सिंग ये होती है कि एक ही जगह पे आप टुकड़े कर देते हैं
और थोड़ी देर के लिए इधर, थोड़ी देर के लिए इधर, थोड़ी देर के लिए इधर, थोड़ी देर, दैट इज मल्टीप्लेक्सिंग का आसान तरीका है इस्तेमाल करने के लिए कि आधा घंटा ये क्लास आपका है, आधा घंटा आपका है, आधा घंटा आपका है।